Hello everyone, this is Joshua and welcome to the HR Pavilion, brought to you by Ms. Hareem with BBA6A. And today I'm joined with Mr. Arthur Morris. Thanks for coming, Mr. Arthur. Welcome. Arthur Morris has been working in the service industry for more than 14 years. So, sir, you had started at Nazra. You worked there for 6 years. You joined as an officer, and then you left there as an assistant director. And then Sir Arthur worked in EFU for 7 years. He joined as an area sales manager, left as a corporate manager. He is currently working in JS Bank for the past 1 year, and he's working there as a training manager. Thanks for coming, Mr. Arthur. I hope everything was all right. You came here safely. My first question is, whenever I get up, I have the quote of the day. So what's your quote of the day which keeps you motivating, keeps you going throughout the day? What's your quote of the day? Thanks for inviting me over here, Mr. Joshua. And I always say that if your weekend doesn't excite you, change your friends. Change your friends, okay. And if Monday doesn't excite you, change your job. Change your job, all right. So, as you have already said in my introduction, thank you so much for a wonderful introduction. No, sir, you deserve that. Whenever anyone hears that I have been working, I have worked in Nadra for 6 years. Yep. They all get very, curious that why you have left. Exactly. It was a government job. I had the same question. Yeah, exactly. Everyone asked me, and it's been in, you can say, in my blood since childhood that I don't want to do a routine job or routine work. Anything I can't do it in routine. I need change. And the only thing constant in this world is change. It's change. But all right. So the main topic of discussion right here is the organization and culture and how training programs and basically training, how it shapes them. So my first question, according to me, I'll tell you that, and you tell me if I'm saying right or wrong. What I believe in organization culture is what makes you want to get up, go to that organization and work there. If it does not make you go there, wake up every morning happy or all right, I have to go to work, मुझे काम पे जाना है अभी आज, I get to do this, I get to do that. That is what an organization culture does to you. That's my thinking. And I would like to ask you, sir, what is your take on organization culture? आपको क्या लगता है organization culture की एक pure definition या vague definition क्या होती है? Okay. Any organization is just like a home or a family. All right. In every family, in every home, there is a leader. And that leader decides what are the rules and what are the odds and what should be done and what should not be done. And if you see someone happy in their home, if you see someone going to home happily, he wants to go to home, because many times I see people, they don't want to go home. They are finding excuses not to go home or go home late. As a curious person, I have always asked so many questions, and I'm a very talkative guy. That's why I'm in this field. And so far I have been very successful because I asked so many questions. And the questions, the best part of asking question is, if you ask the right question, you will get right answers. And when you collect right answers, it will take you to a part, take you another level of your understanding. Yes, it will take you to another part of your life and of your environment. You see everywhere as well. Like, I went to a supermarket and there was a girl who was selling a product, promoting her product, and she said, sir, can you buy this oil for me? I don't remember that name. Product, right. But she said, please buy it from me. I said, no, I'm a loyal customer to XYZ oil and I will stick to it. All right. She said, sir, my manager will get very angry. I have not sold any oil today and I am very sick, and still I'm not, even after my working hours are over, but still he's saying, sell and then go, otherwise I will not let you go. So that time I decided that, okay, I will buy this product from you, and ask my mother, she was with me, that we will never ever buy this product again. Right. Because I saw that the
sales girl was not happy over there. In fact, she was very scared. And most of the time I see this in very much organizations, that people are scared even to stand up for their rights. They know they have this right, but still they don't stand up for that because they have a fear of getting fired. All right. And nowadays, more qualified persons, more educated, more experienced persons are ready to work at lower wages. People are ready to replace you with high experience, with high education on lower salaries. Okay. This is a dilemma that I face daily. I see people, and as we were earlier discussing, that 80% of people are working what they don't want to do. Yeah, we discussed it before. So 80% of world population, not just in Pakistan, but world population is doing what they don't want to do. 20% are doing what they love, and only 1% of those 20% are successful over here. So why don't they want to go to work? As you said, because they don't find an environment where encouragement is being offered. People are not getting encouraged. I think your laugh says that it is relatable, huh? Yeah, you could say. And people are scared that if they do any mistake, they will be treated very badly, and they are not treated like they are valuable employee over there, and that affects on their personal life as well. Okay. So I think that first of all we should train the leaders over there. Okay. First of all, leaders should be trained how to handle their subordinates or their employees over there. Okay. Because I see that whenever someone is given an authority, then they show their real face. Okay. And their real face is mostly not as much good as it was earlier. They show their real colors over there. Okay. When they are authorized, they have power. Okay. Because when someone is in charge, they think they are in charge of their employees. No. They could. Okay. They own them in a way. They have to think the other way. They should think that we are in charge of those people and their outcomes and their emotions and their performances and everything they are doing. If they are underperforming or outperforming, both things should be accountable to the leader. They only focus on the employee and what he or she is doing, whether she is doing good, whether he is doing good or bad, and they judge over there. I made an activity for an organization that in that activity the employer will be asked that what are your goals, what is the company mission and vision, and what is the ultimate goal that this company wants to achieve. Okay. If they all hierarchy is not aligned, like if I am a subordinate and I have a manager, I am being asked this question and I have answered it wrong, then my manager will get fired. Oh, okay. Yes. Manager should be responsible for their subordinates, and the subordinates should be responsible for their subordinates, and it goes throughout the hierarchy until the CEO or president or the owner, and they all should be on one page. Exactly. So that activity was a very successful activity over there because everyone was very fearsome for getting fired if their subordinates don't tell the same exact thing what company is saying. Exactly. That's a very nice tactic. I never heard of that before. But yeah, moving on to our questions mainly. So the first question, sir, I have for you is, how can training programs help employees understand and internalize the values and vision of the organization? Like just now you mentioned of the whole first question you already answered before I even asked you the question. So yeah, that's how you internalize. You created a whole program for them to go on into the organizational hierarchy. How is it going to be followed? How is it going to be everyone on the same page? So yeah. I will add another thing in there, that whenever we hear that training program, trainings,
we only think of the new employees joining over there, new recruiters. The new, जो लोग नए आते हैं उनको ही ट्रेनिंग की जरूरत होती है. Exactly. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. And ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट वन थिंग. एक बार की नहीं होती है. आपको ट्रेनिंग जो है वो ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशर फॉर द ट्रेनिंग इज मस्ट. एंड the employees, all employees, even the CEO, president, all should practice it. Okay. ठीक है. As a famous quote is, practice makes man perfect. So makes a man perfect, yeah. Practice अगर पूरी organization वो कर रही है, तो उसका जो एक culture होगा, that would be entirely different. ठीक है. This is not right now focused because everyone is asking for the numbers. Number क्या produce हो रहा है? Productivity क्या है? Daily productivity, weekly productivity. Yes, and you know that daily productivity, it is micromanagement. Exactly, micromanagement. Exactly. And when you get into the micromanagement, the employees feel like they are stuck. They're stuck, okay. In a prison. Where they have Jail to में go. सारे, Yes, exactly. जाना तो लाजमी है. And the thing you were saying earlier कि ये feeler क्यों आता है? तो वो इस वजह से आता है. They are not encouraged कि आप बताओ आप क्या चाहते हो, you know. उनका फीडबैक नहीं मांगा जाता कि आपके अकॉर्डिंगली क्या है. Yes, like right now I am working with the department, and I asked an employee who was underperforming, and I asked him, what do you think? What 3 things you suggest we should change over here? So you asked that employee that? Yes. Okay. That's new to hear. Yeah, I asked her that what 3 things you suggest us, management, that we should change and you will be able to work over here more happily. Okay. And I was very surprised. जो 3 चीजें उसने मुझे बताई, they were very meaningful, and 2 out of those 3 I've already implemented over there. All right. And they are working great. Or that shows that everyone should be heard. No one should be unheard. Because जब आपको ये फील होता है ना कि आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आपको कोई सुन नहीं रहा है, तो आप अपने अंदर रखते हैं. ठीक है. Like as I earlier quoted that Google 20,000 employees, they got on the roads, protest किया उन्होंने. आप यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, because they all fear that उनको निकाल दिया जाएगा. लिस्ट बनेगी उनकी कौन कौन थे और उनको टारगेट लिस्ट बनेगी. यस, टारगेट करके उनको फायर कर दिया जाएगा. ठीक है. बट वहां पे उनको इतनी आजादी भी थी कि वो प्रोटेस्ट कर सकते थे, वो खड़े हो सकते थे, एंड दे कुड क्वेश्चन हिम. Yeah, there are many organizations where you can't even protest. Yes. Right? आप सवाल नहीं कर सकते हैं. ये रूल है. ये रूल क्यों है? You know, mostly I have heard managers telling their subordinates or employees that company policy है. Company policy. बस ये कह दिया और खत्म. I encourage them as a question the company policy. Why company has made this policy? There must be a logic behind it. कोई तो logic होगा. And I also give them a very deadly tool that whenever someone says it's a company policy, they don't know the answer. Exactly. According to company policy. Yeah. Whenever someone says it's a company policy, go deeper inside. Yeah. Dig more. पूछो उनसे, बताओ अब क्यों है company policy? ये बताएंगे आपको, मैं फॉलो करना शुरू. ठीक है. सही. So that's how you make an organization culture जो कि ना जस्ट के बेरेबल हो, ना कि ऐसा हो कि जहाँ जाके आप काम कर सकें, बल्कि जाने का दिल करे और आप वहीं जाते हैं जहाँ आपको सेफ फील होता है. You know, you have a lot of friends, but whenever something bad happens, you go to a particular friend. When something good happens, you go to a particular friend. Right. When you are emotionally broke, तो आप किसी और दोस्त के पास जाते हो, बिकॉज आपने एक फ्रेम बनाया होता है. हर एक की फ्रेमिंग की होती है. ये मेरा दोस्त इस तरह का है, ये इस तरह का है. वरना कुछ होता है ना, बॉयज में तो मोस्टली होता है कि किसी दोस्त के पास गम लेके जाओ तो वो उल्टा और मजाक उड़ाता है. यही होता है और क्या होता है. ठीक है ना. सो इसके लिए फिर क्या होता है, समटाइम्स यू नीड एन ऑपोजिट जेंडर. जी. इट इज फॉर बोथ, क्योंकि दे अंडरस्टैंड ईच अदर मोर. ठीक है. अब जो आपने मुझे बोला कि यू एक्चुअली आस्क्ड दैट एम्प्लॉय हु वाज अंडर परफॉर्मिंग, या कि उससे आपने सवाल किया कि भाई आपको क्या लगता है कि व्हाट आर वी लैकिंग. दैट रियली सरप्राइज मी, क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स, राइट. वी हैव लर्नड, हमने ये जाना है, हमने ये पढ़ा है कि भाई एवरीवन नीड्स टू हैव अ से इन व्हाट कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, देयर फीडबैक. लेकिन द वे यू आस्क्ड एन एम्प्लॉय हु वाज अंडर परफॉर्मिंग कि भाई आपको क्या लगता है आप अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, जो हमारी गलती जो हम सही कर सके, एटलीस्ट हमारे पार्ट पे तो हम सही कर सके, जिसकी वजह से
continuously, you know, eventually आपका भी part सही हो जाएगा. That was, you know, that I got to learn two very strong facts from you. And thanks. I will also add another thing. As I earlier said, if you ask a right question, you will get a right answer. Exactly. Questions are very important in our life. ठीक है. Everything starts with a question. Every conversation starts with a question. Just like this podcast. Okay. Even if you go to home, what is the first thing you say to your mother, father, anyone? What do you say? The first thing you say to them when I enter home? Yeah. खाने में क्या बनाया? Question. You know, even if you too misogynistic, but even कि आप किसी से मिलते हो उसको सलाम करते हो, you know, अगर कहते हैं हम अस्सलाम वालेकुम, अब उसका आपको क्या चाहिए? वालेकुम अस्सलाम. जवाब चाहिए. जी, जवाब चाहिए. है ना, जवाब आना चाहिए उसका ना. If I wish you good morning, you have to say me good morning. Good morning in back. Even it's not a question, still you have to answer. So everything starts with a question. The more questions you ask, the more you will learn. But good questions and right questions. Okay. And this is not encouraged in organizations. उसमें नहीं किया जाता, ठीक है. Understandable. Moving on to our next question, sir. Can you share an example of a training program that were designed to specifically strengthen the culture of an organization? You also answered this question. I don't think we have to continue, but yeah, you answered a question. Okay, could you just brief it again? Okay. I can tell you another example if you say. I went to an organization where break management was very poor. Break management in what terms and how was it? It was like a contact center where the work is 24/7. All right, yeah. Okay. I'm aware of that. So the breaks, everyone need a break. For going to restroom, for having a meal, or just smoke breaks and everything. So the break management was not good, and I trained their managers and their leaders that you should make a break management where if someone is has not taken any break for a longer period, then you should ask him or her to go on a break. You ask them to go on a break. And it was a surprise for the managers as well. Okay, you ask the employees, do you want to go on a break? Yes, no, you will not ask them, you will urge them. Yes, okay. You will order them. Okay. Then you are sitting on your desk for a break. Yes, you are sitting on your desk for 1 hour, 2 hours, 3 hours. You need a break. You are not a robot. You are human. और humans को break चाहिए, लाजमी चाहिए. ठीक है. तो जब उनके लिए भी सरप्राइज था, यही क्या, ऐसा तो नहीं होता जो बैठा अच्छा है काम करता रहेगा. मैंने कहा हर एक चीज की कैपेसिटी होती है. ठीक है, हर चीज की कैपेसिटी है. कोई भी चीज हो कंटिन्यूस चलती रहेगी वो खराब हो जाएगी. ठीक है, डोंट वेट कि वो खराब हो जाए, उससे पहले ही उसको एक को सिर्फ ब्रेक दिया उन्होंने, और बाकी सारे के सारे एम्प्लॉयज जो है ना वो सब के सब खुश हो गए. और जो जबरदस्ती ब्रेक्स मांगते थे, बहाने करते थे, 5 मिनट का बोल के आधे घंटे में आते थे, वो सब खुद से बैठ के काम करने लग गए कि यार हमारी बारी आएगी, हमें खुद दिया जाएगा. सही समझ रहे हैं? वो एक सिर्फ एग्जांपल सेट करने से पूरा एंटायरली सिनेरियो चेंज हो गया, रिवैम्प हो गया पूरा. सही है. यस. क्यों? कि अगेन वी जस्ट नीड नंबर्स, वी जस्ट फोकस कि कितना आउटकम हो सकता है. अक्सर लोग कहते हैं यार इसमें से जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, मतलब जितना काम ले सकते हो उससे निकाल लो, स्क्वीज आउट एवरीथिंग फ्रॉम. सो इंसानों से काम लेना इस तरह से नहीं होता ना. इंसानों से काम लेने के लिए इंसानों को समझना पड़ता है. ऑल fingers of a hand are not equal. सारी उंगलियां सेम नहीं होती, तो हर एक के हिसाब से चलना पड़ता है. That is another bad thing in culture organization के सबको equal treat कर रहे हैं जहाँ equal treat नहीं करना है, और जहाँ equal treat करना चाहिए वहाँ नहीं कर, मतलब opposite चल रहा है, vice versa चल रहा है. So जब आपके subordinates के सारे प्रॉब्लम्स आप ही रिजॉल्व कर देंगे, नहीं कर सके तो आपका एग्जैक्टली आपका होना ना होना है, आप रिजॉल्व कर देंगे तो मेरी नजर में यू आर परफॉर्मिंग गुड. आई डोंट नीड नंबर्स. ठीक है, क्योंकि जब आप व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज, द एम्प्लॉयज टेक केयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, ठीक है. सो फॉर training, again I will say, whenever we hear that training program, we only think about the new recruits. No, नए आए हैं उनको ट्रेनिंग दो, अंदर लाओ. जहाँ कहीं भी जिस किसी को भी आपको नजर आता है ट्रेनिंग की जरूरत है, वहाँ पे आप उनको ट्रेन करेंगे. that you should be managing them
एज एन इक्वल एम्प्लॉय। ओके, अपॉर्चुनिटीज जैसे इक्वल दी जा रही होती हैं, वैसे ही आपने उनको ट्रीट भी बराबर का करना। सही है, ठीक है सर, I've got to learn actually learn a lot. Thank So you so we're much. moving on to the next question. What role can training play in developing, nurturing strong relationship between employees, teams and departments? If we talk about the teams and departments, employees तो सभी हैं, लेकिन teams की बात करें तो there are different teams and there are different departments. Mostly क्या होता है when you work in an organization, हर एक टीम की दूसरी टीम टसल हो रही होती है कि ये टीम है, इस टीम को ये काम नहीं आता, ये टीम सारा काम हम पे डालती है, इस टीम से काम कराओ, तो ये होता है mostly what I've observed from my experience. And your observation is quite correct कि Thank you. अक्सर होता यही है कि जैसे कि एक ब्लेम गेम होता है ना, इसी तरह से वर्क प्लेस पे भी होता है कि आपने जो है ना एक ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि काम आपका है और आप वो कोशिश करते हैं किसी और पे डाल दें और वो कर लें जी, और वो ये कोशिश कर रहा होता है कि वो अपना काम आपको दे दे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा काम आपका सफर कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीम्स शुड नो दे आर ऑल ऑन वन पेज, अगेन उनका एक ही पूरा गोल हो जी। ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए जिसके अंदर उनको ये ट्रेन किया जाए कि देखिए लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है, take 2 or 3 step back and try to look at the bigger picture. Being an organization or being an industry, आप जो है वो क्या डिलीवर कर रहे हो, उस डिलीवर करने के अंदर किसी एक दो का हाथ नहीं है, किसी एक दो एम्प्लॉय या सिर्फ सीईओ का हाथ नहीं है, उसके अंदर पूरी की पूरी टीम्स हैं। फिर उन टीम्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है डिप्लॉय किया गया है, और जब तक वो सारे के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के साथ साथ टीम वर्क के साथ नहीं चलेंगे, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ नहीं सकेगी। सही, उसके लिए सिंपल, आप हर एक को उनके रोल्स डिफाइन कर दें और उनसे ये कहें कि आप जस्ट अपना जो रोल है, जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, और एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया जाए उनके लिए जिसमें वो अपनी जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चंस के आंसरेबल हो। ये ना हो कि जोशुआ is looking at sales department but मैं उससे जो है वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट की भी चीजें पूछ भी रहा हूँ, उससे काम भी दे रहा हूँ। सही है, ठीक है। Now again comes on the leaders कि वो लीडर कैसे लीड कर रहा है उसको, ठीक है, because as I always says कि a boss should never has to tell that he is a boss। उसको बताना नहीं पड़ेगा वो बॉस है, एम्प्लॉय को ऑलरेडी पता हो यार ये बॉस है। एम्प्लॉय को मतलब जो बॉस होता है, ये जो लीडर होता है ना, उसको इवन के अगर उसको किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं भी कराया ना तो वो पता चलता है, ठीक है ना। ये आप में एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, आपका जो है ना ऐसा ऑरा होना चाहिए, आपके गेस्चर ऐसा होना चाहिए, पोस्टर्स होना चाहिए कि जो लोगों को लगे ठीक है कि ये कोई चीज है, ये कोई चीज है। So you put it like that, that's perfectly fine. All right, moving on to the next question, sir. In what ways can training programs be used to promote collaboration, teamwork within an organization? अभी जैसे कि आपने अभी यही पिछले वाले सवाल में these two questions are interrelated। पिछले सवाल में आपने बताया कि how teams and departments आप उसको कैसे करेंगे, कि आपने बोला कि एक JD अगर एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनी हुई एक एम्प्लॉय की, तो he is only and only answerable to those things which are assigned to him। उससे ये नहीं पता जा रहा कि भाई आप सेल्स टीम में, अब ये टीम का पता है ये टीम ऐसा क्यों है, ऐसा that's exactly what I learned। So moving on to the next question, both of these questions are interrelated। I asked you one question and I'm so happy that the next question you already answered in line, so I'm very grateful for that, sir, first of all। Moving on, Arthur sir, can you share an example of a training program that was successful in promoting culture in innovation? मतलब ऐसी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम कराई कि जैसे कि आपने मुझे बोला कि आपने एक एम्प्लॉय, अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉय से पूछा कि आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, इस टीम में, इस डिपार्टमेंट में ऐसा क्या हो रहा है जो हम इम्प्रूव करें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़े। तो ऐसी कोई एग्जाम्पल है ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो आपने, भले आपने नहीं कराई हो, मतलब इंडस्ट्री में कहीं भी हो, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल या टीम्स होती हैं वो खुद इनोवेट करें, मतलब खुद आइडियाज परफॉर्म करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल शेयर यू एन एग्जाम्पल ऑफ माइन कि आई न्यू अ पर्सन, ठीक है, I was in a department and I used to work before and in fact this is the only industry that came into my mind कि सिर्फ एक इसी में शायद इनोवेशन की जो है ना, जी जब IT के बारे में सोचते यार ये लोग इनोवेशन वगैरह लाते हैं, मतलब इसके अलावा किसी और में इनोवेशन अगर कोई कोशिश करे भी तो लाने नहीं दी जाती, बिकॉज वो हमेशा कहते हैं हमारे एंसेस्टर से यही चला आ रहा है, ऐसे ही काम होता है, ये होता है, जबकि नाउ इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड। For that you have to move on and again change. If you don't change with the time will change you and leave you behind. So you have to change again. Change is inevitable.
सो उसके साथ खुद को चेंज करना चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपने किसी को मौका दिया है कि स्पीक अप एंड टेल व्हाट वी कैन डू राइट एंड और व्हाटएवर वी कैन करेक्ट, तो ही शुड बी नॉट जस्ट हर्ड बट ऑल्सो देयर शुड बी सम एक्सटेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑन दैट, कि उसके ऊपर कुछ काम भी, उसे फील आए कि मैंने जो कहा था वो सिर्फ सुन के अनसुना नहीं हुआ, बल्कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है। वो एक एग्जाम्पल जब सेट हो जाती है ना, देन पीपल ट्राई टू स्पीक अप। एंड हाँ, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि अजीबोगरीब आइडियाज भी आ रहे होते हैं, उसके अंदर आपको फिर वो भी एक्सेप्ट करना होता है और उसे बहुत ही एक पॉजिटिव मैनर में ही समझाना होता है कि देखें यू आर बीइंग फूल्ड नाउ, ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, हाँ देखेंगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, बट आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसके अंदर इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, तभी आपके पास जो है ऐसा कुछ आ सकता है। अब एक ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना दिए जाते हैं, उन पे इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, बट व्हेनेवर समवन केम विद एन इनोवेशन ही इज नॉट इनकरेज्ड। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि वो इनकरेजमेंट जरूरी है कि आपके लीडर्स की तरफ से भी हो, एंड दे शुड बी ओपन फॉर न्यू आइडियाज। ओके, ओपन फॉर न्यू आइडियाज, ठीक है। जस्ट लाइक अभी कल रात की बात है, आई वाज स्पीकिंग टू माय मैनेजर एंड देयर वाज समथिंग ही इज सेइंग कि ये 100% नहीं हो रहा, ये 100% नहीं हो रहा, ठीक है, तो अब हम क्या करें, क्या हम इनकी सैलरीज में से डिडक्शन करें, अच्छा, या उसको और बढ़ा दें। मैंने उनसे कहा कि सर व्हाई डोंट यू थिंक वाइस वर्सा, क्या आप इसके अंदर थोड़ा लेवरेज दे दें उनको, because they know that if they are doing a certain thing for 1,000 times and they have made one mistake, all their allowances will be deducted। तो बेहतर नहीं है कि उसके अंदर थोड़ी सी लेवरेज है, क्योंकि बिकॉज वो सोचता है कि भाई अगर एक भी गलती हुई तो मेरे सारे कट जाएंगे पैसे, ठीक है, थोड़ा सा लेवरेज होगा तो वो उसे पता होगा कि हाँ यार 90% भी अचीव कर लिया ना मैंने, तो मुझे वो मिल जाएगा। अभी उसे पता है कि मैंने 100% नहीं किया तो पैसे पूरे कटने हैं, तो वो कहता है 50% भी कर लो बहुत है, ठीक है। तो उसमें क्या, यू शुड बी ओपन फॉर इनोवेशंस एंड चेंजेस। जी, तो जस्ट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इज नॉट इनफ, दैट वुड बी माय आंसर। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज नॉट इनफ, ओके सर। अब जब हम इसकी बात करें इनोवेशन की, एंड यू नो कि हम लोग अपने जैसे सबऑर्डिनेट्स को कैसे बोलेंगे कि भाई आप आके अपना फीडबैक दें, हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ ताकि आपको एक बेटर वर्क एनवायरनमेंट, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन, एक कोहेसिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मिले। तो ये मेरे दिमाग में एग्जांपल आ रही है, हमारे कोर्स था मीडिया मैनेजमेंट का, हमारे सर थे, तो वो फूड पैंडा में काम करते थे, तो उसमें एक कैंपेन था, आई रिमेम्बर, उसमें उसका नाम था डिनर विद द सीईओ। तो मतलब उसमें क्या हुआ था कि एम्प्लॉइज थे, उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स थे, कुछ टेस्ट वगैरह थे आई बिलीव, और ना एंड में क्या हुआ था कि एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया था एंड ही हैड टू ही वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी के फूड पैंडा के सीईओ के साथ सिट डाउन, हैव अ डिनर, उससे कन्वर्सेशंस करें। ऑब्वियसली व्हेन यू आर सिटिंग विद द सीईओ यू कैन टेल हिम कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अगर कर सकें तो यू नो गिव मी सोल्यूशन, इसको बेहतर कर सकें। और ऑब्वियसली जब एक सीईओ बैठेगा और उससे पूछेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सीईओ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, आर्थर सर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक दीज आर द फ्लॉज, आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। सो आई बिलीव यू नो दैट एग्जाम्पल रियली शेप्ड, if you're talking about examples, so I believe this example is you know a very unique one कि आप सीईओ के साथ बैठ रहे हो। तो what is your take on this? I think whatever we were having conversation over here, कि जितनी भी हम बातचीत कर रहे थे, उसका एक बहुत फाइन एग्जांपल दिया है आपने कि इसके अंदर एक डायरेक्ट, हम तो सिर्फ बात करते हैं मैनेजरियल लेवल्स पे और हायरार्की पे, डायरेक्ट अगर एक सीईओ बैठ रहा है और वो सुन रहा है, तो मैं जो इस पे सोच रहा हूँ कि जितने भी मैनेजर्स होंगे और उनके सबऑर्डिनेट्स होंगे, असिस्टेंट मैनेजर होंगे, ये सब अपने एम्प्लॉयज के साथ कितना अच्छे से चल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ये डर होगा कि अगर ये मेरा एम्प्लॉय लकीली जाके बैठ गया सीईओ से, तो वो तो जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताएगा वहाँ पे, और मेरा भी नाम हो सकता है कोट कर देगी ये मैनेजर और यूं करते हैं, तो वो सारे वो हो जाएंगे। ये है तो एक चीज़ अच्छी, बट अगेन इसका जो दूसरी साइड है वो ये है कि जिस किसी का भी नाम आया सीईओ के साथ बैठने का, उसको पहले से थ्रेटन कर दिया गया एंड कहा ये गया हम जस्ट एक्चुअल प्रॉब्लम है, यू विल बी शेयरिंग दीज प्रॉब्लम्स जो शायद मैनेजर्स के लिए हो, एम्प्लॉयज के लिए ना हो, या उन पे इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो, या उससे उनको फायदा ना हो रहा हो, बट उनको तो भाई रहना है नहीं रहना, एक बड़ा कॉमन सा एक सेंटेंस होता है,
जॉब जी। करनी है या नहीं करनी, नहीं करनी, टिकना है नहीं टिकना। हाँ रिजाइन दे दो वरना। जी। तो वो उसको अगर इस तरह का कोई थ्रेट मिला हुआ है और फिर वो सीईओ के पास जाके बैठा है, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो कोई एक्चुअल जाके बता सकेगा? प्रॉब्लम बता सकेगा कि नहीं? ठीक है, मुश्किल होगा ना, मुश्किल होगा। क्योंकि डायरेक्ट बहुत बड़ा लेवल आ जाता है सीईओ का ना। सो एक जगह पे मैं अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूं तो हाँ एक अच्छी जगह चीज थी, नेगेटिव, बट उसके अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करूं कि कुछ हमारे पास ट्रबलसम एम्प्लॉयज भी होते हैं, कोई भी चीज की है जो उन्होंने गलत कर दिया जी। उनसे कहा गया क्या आपको इसके ऊपर ट्रेनिंग दी गई थी? वो कहते उसका हैं जवाब नहीं नहीं दी गई। ठीक है, फिर उनके सामने रखे जाते हैं, ये देखिए प्रूफ्स, यू हैव साइंड दिस डॉक्यूमेंट, यू हैव एक्नॉलेज्ड दिस साइन की भी ईमेल, आपने, इवन के आपकी वीडियो बनी है कि आपको ट्रेन किया जा रहा है। सर वो तो जबरदस्ती हुआ था। ओके, वो तो हमें बोला गया था कि आपने कुछ नहीं कहना, आपने साइन कर देना है, आपने एक्नॉलेज कर देना है, आपको कुछ आता है या नहीं आता है। ठीक है। नाउ दैट यू कैन नॉट यू नो उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं। सही है। एंड अगर सीनियर मैनेजमेंट के सामने कोई एम्प्लॉय ऐसा बोल ट्रेनर दे, या मैनेजर के लिए ये बात बोल देता है तो सीनियर मैनेजमेंट तो बोलेगी कि ये तो गलत चल रहा है, गलत चल रहा है। मैनेजर से ही सवाल होगा, ये आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को थ्रेट कर रहे हैं, सबको फायर करो। ठीक है। सो जो सीईओ वाला जो आप बता रहे हैं उसके अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज कहूंगा, जब तक कि जैसे रिस्पेक्ट आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, जाहिर सी बात है जी, दैट यू हैव टू अर्न जी, एंड फॉर अर्निंग दैट बहुत ही एक सिंपल रूल है। मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूंगा कि ना वट एवर यू वॉन्ट फर्स्ट यू हैव टू गिव, यू वॉन्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम मी, फर्स्ट you have to give respect. You want attention from me, I'll give you attention then. Yes, exactly. You want care, I'll you care have for you to then. care for me. Exactly. ठीक है, so जो भी आप देंगे, what goes around comes around ना? Exactly. So आप जो देंगे वो जो बोओगे वो काटोगे। so जो भी आपको चाहिए, इवन के आजकल तो आप देखो पेरेंट्स और उनके किड्स के बीच में रिलेशन है उसमें भी ये हो गया है। अगर आप अपने किसी बच्चे को 4 लोगों के सामने स्कोल्ड करो, डांट दोगे, तो वो बच्चा शायद उस वक्त कुछ ना बोले लेकिन बाद में वो बोलेगा कि आपने मुझे सबके सामने क्यों डांटा, और एक लेवल आएगा वो सबके सामने भी बोल पड़ेगा कि आपने मुझे ऐसे क्यों डांटा, आई फील ashamed, आई फील embarrassed. So nowadays we also have to give respect to our children as well. बोला अच्छा, उनको किसने बोला तुम ज्यादा बड़े नहीं बनो, अच्छा जो कह दिया वो करो, बिकॉज दे डोंट हैव आंसर। अगेन वही चीज आ गई कि कंपनी पॉलिसी, एग्जैक्टली ये बड़ों की पॉलिसी वही चलती आ रही है, जबकि एक बहुत सिंपल सा इसके पीछे लॉजिक था। अगर आप बोले तो मैं इसका जवाब देता हूँ आज। जी, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक ये था कि उस दौर की बात है जब लाइट्स इस तरह से नहीं होती थी जैसे आज है, ठीक है। सो अंधेरा हो जाने के बाद इफ यू ट्राइंग टू कट योर नेल्स, तो इतने अच्छे शार्प नेल कटर, यस, बाल बना रहे हैं आप, तो वो बाल जो है वो गिर जाते थे, और उस टाइम पे आपको पता है जादू तो नहीं, ये सब बहुत होता था, तो इन चीजों को यूज किया जाता था। और हाँ, एक और था कि आप ब्रूमिंग नहीं कर सकते, झाड़ू वगैरह नहीं लगाए मगरिब के बाद, ठीक है ना, उसके लिए भी बोला जाता था। वो क्यों होता था? अंधेरे में कोई आपकी ज्वेलरी वगैरह अगर गिर चुकी है तो आपको पता ही नहीं चलेगी, एंड यू विल थ्रो इट अवे। ये रीजंस होते थे। चीज गिर गई हो तो मेरा सिक्का घूम गया, मुझे मिल गया, एग्जैक्टली। अब वो जब लाइट्स इन्वेंट हो गई तो खत्म हो गई, क्योंकि कैंडल लाइट डिनर ही अच्छा लगता है, कैंडल लाइट में नेल कटिंग अच्छी नहीं लगती। ठीक है सर, we've reached last 4 questions. It was an honor working with you, talking to you. This was all mine. Thank you, sir. And I've learned a lot. I'm going to leave this room a changed man, if you could say. I have a lot of knowledge right now that you've given me, and I'm very grateful for that. Our team is going to learn a lot from this. And thank you once again for being here with us, sir. Thank you. Thanks a lot.